Okay, so let us start today's lecture. अगर किसी की कोई क्वेरी नहीं है, that's very good. I hope आप लोगों को सारी चीजें समझ आ रही होंगी, क्योंकि अब हम सारी चीजें Yes, ma'am. अब हम जितने भी टर्मिनोलॉजी अभी तक हमने डिफाइन किए थे, we will use that those very frequently. So whenever I will use, I hope you all are aware with that and you also know what I mean with that. Now, from today we will start the linear transformation. Till now we have read vector space, how to verify whether given set is a vector space or not. After that, what is subspace? After that, linear span, then linearly independent dependent sets, then basis, and after that we have finished with dimension with all properties of respective topics. Now today onwards we will start linear transformation. Linear transformation basically a map from a given vector space to another vector space similar to others. जैसे हमारे रियल नंबर सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट जैसे किसी भी अदर सेट पे फंक्शंस डिफाइन होते हैं, इन द सेम वे वेक्टर स्पेस पे भी हमारे फंक्शंस डिफाइन होते हैं. फाइन. वेक्टर स्पेस पे फंक्शंस डिफाइन होने के लिए क्या होता है कि कोई भी एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे डिफाइन कर सकते हैं, बट देयर आर सम पर्टिकुलर फंक्शंस व्हिच आर यूजफुल फॉर अस and those are comes with linear transformation. Basically, one of the main motive of learning this linear algebra is also learning linear transformation and convert the linear transformation in the form of matrix. So let us formally define what will be a linear transformation. Let V and W be two vector spaces over the field F. See here, V and W will be vector space over the same field. However, the operations may be different on them. A function t from V to W is said to be a linear transformation from V to W if for every xy in C and xy in V and C in F, this function t satisfies these two properties. First one is what? T of x plus y is equal to tx plus ty and t of cx is equal to ct of x, not here y. Ct of x. Fine. So any function which satisfy these two properties will be called a linear transformation. Here two things are notable for us. This x plus y, here xy coming from V, so x plus y, addition between x plus y will come with respect to this V, and here tx plus ty, and tx and ty are members of this W. Therefore, here this plus will be come from this W. In the same way, whenever we are writing C into X, we will utilize the scalar multiplication given in V. And whenever we are writing C into TX, this means the scalar multiplication defined on the set W. So whatever will be the function, if this function satisfy these two criteria, then we will call a linear transformation. Basically, these two properties are also known as linearity property. If you will go back to our previous definition of vector space, one name of our vector space is also linear space. Why? Because our linear space satisfy these two properties. That if we are taking any linear combination of those elements, see here x plus y is what? A linear combination of x and y, and cx is also a linear combination of x with some scalar. That's why one name of this vector space is also called linear space. Now we will see some example on that. Define T from m cross n over f to n cross m over f by T of A is equal to A transpose, where A transpose is the transpose of matrix A. Then T is a linear transformation. Let us see how it will be.
See, what are the first requirement for our linear transformation? First thing is what? V and W should be vector space over the same field. If they are defined on different field, they will not be a linear transformation over the field F. Right? Then T from V to W will be called is said to be a linear transformation if first thing is what? T of x plus y is equal to T of x plus T of y for every xy in V, and second is what? T of Cx is equal to Ct of x for every C in F and for every x in V. If our function satisfies these two properties, then we will call this as a linear transformation. For example, M cross N over R, one vector space V, and W we have taken N cross M over R. First tell me, these two are vector spaces over the same field? Yes, ma'am. Right? What are the elements of this M cross N? M cross N में कौन है? M R पे डिफाइंड है. M cross N में मैट्रिसेज हैं ऑफ डायमेंशन M cross N, जहां पे Aij, see, today we will also define some notation कि A, अगर हम ऐसे मैट्रिक्स A ऐसे लिख रहे हैं M cross N, this means what? A is a matrix of dimension M cross N. And if I am right, we can also write this element, this matrix A as Aij of dimension M cross N. Both represent the same matrix. This represents element wise, this represents whole matrix. Fine? We can go with this? Yes. Okay. So we will utilize the below one notation, not the full one, for our convenience. Aij of dimension M cross N such that Aij belongs to R, because M cross N is a set of matrices with real entries of dimension M cross N. Fine? Yes, sir. And W is matrices of dimension N cross M with real entries. So W will be what? B Ij of dimension N cross M such that Bij also belongs to R. Now, I want to define a transformation from V to W such that T of A gives A transpose. Fine, we can define. Means this function is well defined here.
अगर हम वी का कोई भी मेंबर लेंगे वो एक हमारा m क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा। और इस मैपिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस A को हम लोग A ट्रांसपोज पे भेज रहे हैं। तो अगर A की डायमेंशन m क्रॉस n है तो A ट्रांसपोज की कितनी होगी? N cross M. n क्रॉस m होगी। सो नाउ कैन आई से दिस मैपिंग इज वेल डिफाइंड फ्रॉम V to W? Yes, ma'am. Right? Now let us verify, is this a linear transformation or not? For being linear transformation, what we have to check, for every xy in V, and t of x plus y is equal to t of x plus t of y, and t of cx is equal to c into t of x. Then let A and B be two members of our V, right? Then T of A plus B will be what? T of A plus B will be, let us write again in element wise, Aij of dimension m cross n plus Bij of dimension m cross n. Fine. This will be what? Ma'am, T से multiply. T मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, T एक फंक्शन है। T तो एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं ना हम V से W पे। Yes, ma'am, समझे. ओके, सो T ऑफ, पहले हम देखेंगे कि इन दोनों एलिमेंट्स का सम होगा क्या, क्योंकि हम डायरेक्ट तो नहीं ब्रेक कर सकते ना किसी को। A plus B वॉट एवर विल बी द एलिमेंट्स, आफ्टर दैट वी विल अप्लाई दिस टू ट्रांसपोज। फाइन. So whenever we will add two elements of m cross n, what will be our resultant? Aij plus B. मैम ऊपर का जो डायमेंशन है वो N cross M है. हाँ, तो यहाँ भी तो m cross n लिखा है ना, ये N इस cross. B के लिए, Yes, ma'am. इस B, ये B हमारे दोनों V के एलिमेंट हैं। V में तो हमारे m cross n की मैट्रिसेज है ना। यहाँ हमने ये दोनों डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखा था, इसको किसी और नोटेशन से दे देते हैं। Yes, ma'am, understand. Continue, please. V दे देते हैं। See, okay, now this will be a member of our element, a member of our vector space V, क्योंकि V हमारा वेक्टर स्पेस है, वेक्टर हाँ वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा। फाइन. तो अब ये हमारा एक V का मेंबर है, V के मेंबर पे ये मैपिंग कैसे डिफाइन है कि उसको ट्रांसपोज में बदल दे रही है, राइट? सो व्हाट विल बी दिस वन? This one, whenever we will do, it will become A ji plus B ji of dimension n cross m. Will it be? Yes, ma'am. क्योंकि जब ट्रांसपोज लगाते हैं तो रो और कॉलम एक्सचेंज हो जाते हैं। अब ये भी तो सम ऑफ दो मैट्रिसेज है ना, A ji plus B ji. We can also write this one as A ji of dimension n cross m plus B ji of dimension n cross m, right? We can do this. जी मैम. And Yes, ma'am. AGI will be what? A transpose ना, AIJ हमारा m cross n का था, AJI इसी A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। Yes, ma'am, होगा. So this will be our A transpose plus B transpose, and transpose is giving what? T of A plus T of B. T of A
plus T of B. So now can I say that T of A plus B is equal to T of A plus T of B? Yes, ma'am. We can say that now. Now what will be T of C into A? A B belongs to B and C को भी यहीं ले लेते हैं. मैम टी ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ ए, ये प्री डिफाइंड है ना? हाँ. ओके मैम. T of A is equal to A ट्रांसपोज एक मैपिंग हमने डिफाइन की. अभी हमें बस ये पता है कि ये कोई एक मैप है जो V के एलिमेंट्स को W के एलिमेंट्स से रिलेट कर रहा है. फाइन. हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, क्योंकि फंक्शंस तो बहुत सारे हो सकते हैं ना. मैपिंग तो V से W पे बहुत सारी हो सकती है ना. जी मैम. So now T of CA will be what? Where C is any scalar, by definition CA will be what? C Aij of dimension m cross n. C is a scalar, A is a matrix. What will be this multiplication? स्केलर में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? 2 3 4 5. How you will multiply this 2 in this matrix? मैम हर एक एलिमेंट से हो जाएगा. हर एक एलिमेंट में जाएगा. दैट मीन्स इस C को हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भेज सकते हैं बाय डेफिनेशन. यस मैम. C Aij of dimension m cross n. Now this Cij will also be a matrix of our V, our element of our V. So now whenever we will apply this T on the member of our V, what it will give? C A J I of dimension n cross m. ट्रांसपोज दे देगा ना. T of A is equal to A transpose. यस मैम. एंड अगेन अगर C सारे एलिमेंट्स में कॉमन है, सारे एलिमेंट्स में मल्टीपल है, वी कैन टेक आउटसाइड दिस C into AJI of dimension n cross m. And this is what? Yes, ma'am. C into A transpose, and this will be equal to C into T of A. So now from can I say that for every AB in V and C in F, we have T of A plus B is equal to T of A plus T of B. And मैम here T represents transpose. एक मिनट. C मैम into T. हाँ बताइए. मैम यहाँ पे T ट्रांसपोज रिप्रेजेंट कर रहा है ना. T मतलब ट्रांसपोज T of A रिप्रेजेंट plus B. नहीं, ये T वाला of T A एक plus मैपिंग डिफाइन कर रहा है. जब A किसी मैट्रिक्स के ऊपर लगा है T, वो वाला तो ट्रांसपोज हुआ ना. यस मैम. ओके मैम. Okay, so now this T satisfy these two criteria by our definition. Can I say that T is a linear transformation? Yes ma'am. Yes, ma'am. Another example is given for n greater equal 1, T from Pn R to Pn minus 1 defined by T of fx is equal to f dash x. Second example is given T from Pn of R to Pn minus 1 of R. फाइन. ये हमारा वेक्टर स्पेस था Pn R.
Pn minus 1 r भी था, सेम फील्ड के ऊपर है. We can define a function from this. The function is defined how t of f of x is equal to f dash of x, right? P and R collection of polynomials of degree less than or equal to n है. अगर ऐसे फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमेशा हमारा फंक्शन आएगा ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1. यस x3 को यस मैम. एक डिग्री कम हो जाती है ना डिफरेंशिएशन में, वन टाइम डिफरेंशिएशन में. जी मैम जी. So from this, if the definition of this fx and f dash x is clear, can we say that this t is well defined from pnr to pn minus 1 r? Yes, ma'am. Right? Let us Yes ma'am. verify this one is a linear transformation or not. Let's start verifying. कैसे करेंगे हम लोग? Let f and g be any two functions from Pn over R and constant कोई ले लेते हैं C. C belongs to some member of R क्योंकि स्केलर भी एक चाहिए. Then T of f of x plus g of x will be what? This will be T of Ma'am, t of f of x plus t of g of x. नहीं, ये ब्रेक होगा, ये कैसे पता कि मैम हमें ये शो करना. हाँ, ऊपर वाले रूल से ये ब्रेक नहीं कर सकते. ये रूल इसमें होल्ड होगा कि नहीं, यही चीज तो हमें वेरीफाई करनी है ओह यस मैम. कि ये टी दोनों पे जाके अलग अलग ब्रेक हो जाएगा या फिर नहीं जाएगा. ओके. सो अगर ma'am. अब हम लोग बैक आते हैं, पी एन आर हमारा सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स था या सेट ऑफ फंक्शंस लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे एफ और जी हमारे कुछ पॉलिनोमियल्स है ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन. एफ एक्स प्लस जी एक्स कैसे डिफाइन हो जाता है? अच्छा तो मैम पहले हम क्या 1 मिनट, पहले अगर हम पी एन आर में एफ ऑफ एक्स लिखे तो इससे तो कंफ्यूजन नहीं हो रही ना कि ये एफ ऑफ एक्स इसका मेंबर है या नहीं. यहाँ कंफ्यूजन है मैम. ठीक है, पॉलिनोमियल में लिख लेते हैं, नो इशू. पी एन आर का मेंबर है कैसा होगा? समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू n ए आई एक्स टू द पावर आई. फाइन, ऐसा होगा ना पी एन आर का. यस मैम. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? मैम ए ऑफ आई तो कांस्टेंट है ना. हाँ, ए आई तो कॉन्स्टेंट है, ए रियल ऑफ आई इंटू आई एक्स टू द पावर आई माइनस 1. समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू n, एन. यस मैम. राइट. ओके, यस. ए ऑफ आई एक रियल नंबर है और आई भी एक रियल नंबर है. इसको हम स्विच कर ले, मतलब कम्यूट कर ले, आई को पहले लिख ले, ज्यादा बेटर दिखेगा. यस मैम. I into a of I. Fine. This will be our definition of this function t. Now we want to verify whether this definition of t satisfies linearity property or not. Can we say that this t is a linear transformation? Okay, अभी तक हम लोग शायद डायरेक्टली यूज करते थे. Let us see. इसमें भी दो मेंबर्स फिर हमें ऐसे ही लेने होंगे ना. Summation I is equal to 0 to n ai
थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए. Let V1 is equal to summation I is equal to 0 to n AI x to the power I. Fine. एक member. And V2 is equal to summation I is equal to 0 to n BI x to the power I. ये दोनों हमारे member है PNR के. है ना. Yes, ma'am. Polynomial of degree less polynomial of degree at most n Pn over r. ठीक है. और C कोई एक रियल नंबर है क्योंकि फील्ड हमारा रियल नंबर है. देन T of V1 plus V2 will be what? T of V1 plus V2 P and R usual polynomial addition है. So this will be summation I is equal to 0 to n AI x to the power I plus summation I is equal to 0 to n BI x to the power I. I have just substituted values of this V1 and V2. Now, if I will add these things, what I will get? T of summation. Summation of I equals to 0 to n x to the power I कॉमन होगा और उसके बाद AI plus B. Right. Now, our definition of T is given by this one. If we will apply the definition of T now here, what we will get? AI plus BI x to the power I minus 1 summation I is equal to 0 to n. We will get this one now. Okay. Now, this I is a real number, AI is a real number, BI is a real number. This can go and distribute inside. Yes, ma'am. And also this summation can be distributed on these two numbers. दोनों का sum है. So this we can write summation I is equal to 0 to n AI x to the power I plus I minus 1 plus summation I is equal to 0 to n I BI x to the power I minus 1. Will this be? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And this thing is what? See our definition. Ma'am, V1. T of V1, right? T of V1. Yes, ma'am. T of V1 plus this one T of V2. T of V2. So one criteria for being linear transformation is satisfied. Let us verify. क्योंकि जब दोनों verify होंगे तभी हम बोलेंगे कि वो linear transformation है, किसी एक से नहीं. T of CV1 will be what by definition? This will be T of summation I is equal to 0 to n C AI x to the power I by definition. Yes, ma'am. This will be when differentiated. This will give us I C AI x to the power I minus 1 summation I is equal to 0 to n. Right? Again, if we will open this one, this will be a polynomial in which each coefficient is multiplied by C. Can I take this C outside of this summation? Yes, ma'am. Then this will be C summation I is equal to 0 to n I AI x to the power I minus 1
and this will be what? T of V1. Right? Yes, So, ma'am. so again we have seen for T defined from Pn R to Pn minus 1 R defined by T of V1 is equal to D by dx of V1. The same thing, क्योंकि अगर हम probably अगर डायरेक्ट हम V डैश लिखते तो कंफ्यूजन हो सकती है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए हमने पहले इसे लिखा. Defined by this, then T of V1 plus V2 is equal to T of V1 plus T of V2 for every V1, V2 in PNR and C T CV1 is equal to C T of V1 for every C in C is scalar and V1 in PNR. These two conditions hold, and hence T is a linear transformation, right? अगर हमने कोई फंक्शन ऐसे डिफाइन किया कि जो उस फंक्शन का डेरिवेटिव दे दे रहा है तो वो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस t को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं. यस मैम. राइट. और ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हम डिफरेंशिएशन लिए इसे हम लोग डायरेक्टली भी रिकॉल कर सकते हैं. डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, अभी के लिए यही रखते हैं, जब आएगा देख लेंगे. नाउ कैन यू वेरीफाई फॉर द थर्ड वन? For n greater than or equal to 1, T is defined from PNR to Pn plus 1 R defined by T of fx is equal to integral f of x dx. Then whether this T is a linear transformation or not, can you check please? मैम वहाँ डिफरेंशिएशन की जगह यहाँ इंटीग्रेशन होगा ना? हाँ मैम पहले जो किए थे डिफरेंशिएशन. यस मैम. हाँ, तो इंटीग्रेशन में चेक करिए कि क्या इंटीग्रेशन का जो ऑपरेशन है वो हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं. तो उसे हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं कि नहीं, उसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं कि नहीं. चेक करिए, जैसे हमने यहाँ डिफरेंशिएशन के लिए किया, हमारा t कहाँ से कहाँ डिफाइन है, हम डिफाइन कर देते हैं. t is defined from Pn R to Pn plus 1 R, है ना, by T of summation I is equal to 0 to n ai x to the power I. इसका इंटीग्रेशन होता है तो क्या होता है? मैम ए a एक्स of आई I प्लस 1 अपॉन 1. ai x to the power I plus 1 upon I, है ना, I plus 1, है ना. यस मैम. और एक कांस्टेंट भी Yes, आता ma'am. है, एक कांस्टेंट भी आता है ना. plus C.
प्लस सी की जगह, अच्छा सी ही ले लीजिए, स्केलर को के ले लीजिएगा। तो अगर हमारा टी ऐसे डिफाइन है तो प्लीज अब वेरीफाई करके बताइए कि क्या ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। Alternatively, can I write this one also as summation I is equal to 0 to n plus 1 bi x to the power I। एक ये कांस्टेंट वाला जो था इसे हम अंदर ले गए और इस i प्लस 1 को n प्लस 1 से रिप्लेस करके i ले आए। Where b0 is equal to c and bi is equal to ai upon I plus 1 for I greater than equal 1। अब हमें चेक करके बताइए कि ये t जो हमारा इंटीग्रल ऑपरेटर था वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। चेक। Yes, ma'am. 1 minute. मैम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड कर रहा है। आ रहा है। Yes, ma'am. Integral operation is also linear transformation. What about this one? ये तो क्या कहते हैं इसे, कौन सा इंटीग्रल कहते हैं इसे जिसमें लिमिट नहीं होती, इम्प्रॉपर, डेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रल। Indefinite integrals are linear transformation. What about definite integrals? Let me check for this also. Will this be a linear transformation or not? Yes, ma'am. It's also hold. It also hold, right? Yes, because we all know that key integral a to b f of x plus g of x d of x is equal to integral a to b f of x plus dx
इंटीग्रल a to b f of x dx plus integral a to b g of x dx, right? Yes, डेफिनेट ma'am. इंटीग्रल हमारे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो अगर एफ एक्स और जी एस पॉलिनोमियल ही है तो भी तो सेटिस्फाई करेगा, है तो फंक्शन ही. सो दिस Yes, ma'am. इम्प्लाइज Yes. व्हाट? t of v1 plus v2 is equal to t of v1 plus t of v2. ये हमने इतना ज्यादा ओपन करके आप लोगों को क्यों दिखाया, ताकि एक बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट? And we also know that t of c f of x dx, sorry, c f of x will be what? Integral a to b c f of x dx. C is a constant. It can be go from it can go outside of this integral sign. This will be equal Yes, to ma'am. c integral a to b f of x dx. और ये f of x dx क्या है हमारा? c t of f of x, right? So this definite integral also satisfies these two properties. मैम डेफिनेट भी प्रूफ हो रहा है और इंडेफिनेट भी होगा ना? हाँ मैम दोनों. हाँ. हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल इंडेफिनेट इंटीग्रल दोनों ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन ऑपरेटर भी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यस मैम. राइट? क्यों? क्योंकि हमारा f ऑफ x प्लस g ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? f डैश ऑफ x प्लस g डैश ऑफ x. यस मैम. एंड k f ऑफ x का होल डैश डेरिवेटिव, k स्केलर k कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन का इस पे फर्क आएगा नहीं क्योंकि ये मल्टीपल में है, बाहर चला जाएगा और ये बन जाएगा k f डैश ऑफ x. यस मैम. So differential operator is also a linear transformation and integral operators are also linear transformation. यस मैम. Yes, ma'am. तो अब अगर हम आप लोगों को कोई भी फंक्शन देंगे, कोई मैपिंग डिफाइन करके देंगे किसी एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे, तो आप लोग हमें ये तो चेक करके बता सकते हैं ना कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं. यस मैम. Yes, ma'am. बता सकते हैं. Okay. Now we will move forward. What is next? We have some basic properties of this linear transformation. The first of this, which says that t of zero vector means t of 0 vector of v will be equal to 0 vector of this w. And next one says that I will go to prove one by one. And next one says that t of c x plus y is equal to c t of x plus t of y for every xy in V. So now previously we are checking one by one both of these two conditions. Once I will prove this second property, you can directly go with this and verify whether your given transformation is linear transformation or not. Also, we will see in view of this linear transformation, t of x minus y will be t of x minus t of y, and summation of this will be equal to this t will go inside of x, will be operated inside of x, and this summation will come outside. Therefore, t of summation I is equal to 1 to n ai xi will become summation I is equal to 1 to n ai t of xi. मतलब अगर हम इस ए एक्स आईज के लीनियर कॉम्बिनेशन को लेके उसके ऊपर टी ऑपरेट कर रहे हैं, वो हमारे बराबर होगा कि हम उन पर्टिकुलर वेक्टर्स पे टी को अप्लाई करके उनका लीनियर सम कर दें उन्हीं कोफिशिएंट्स के साथ. लेट अस सी वन बाय वन. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ linear transformation.
first one says that t of 0 is equal to 0, where this 0 is belongs to v and this 0 belongs to w, क्योंकि t हमारा v के एलिमेंट्स को w के एलिमेंट्स पे भेजता है ना. Okay, so it will be more better to write v और w को हम सफिक्स में डाल दें ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि वो दोनों दो जीरो हैं, सेम जीरो नहीं है. t of 0 v is equal to t of 0 of w. 0 of w. 0 इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अगर t हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो v के जीरो वेक्टर को w के जीरो वेक्टर पे भेज देता है. Let us see how it will be. We know that for every x in v, x plus 0v is equal to x. जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है ना कि उसे हम किसी भी वेक्टर में ऐड करें हमें फिर से ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा. यस मैम. यस मैम. अब अगर दोनों क्वांटिटी सेम है सो वी कैन अप्लाई t ऑन बोथ साइड. दिस विल इम्प्लाई एज व्हाट t ऑफ x प्लस 0v इज इक्वल टू t ऑफ x. इट विल बी, है ना, t को बस हमने दोनों साइड ऑपरेट किया. अगर आर्गुमेंट सेम है तो मैपिंग भी सेम जाएगी. दिस विल इम्प्लाई एज व्हाट t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इन दोनों पे ब्रेक हो जाएगा. t ऑफ x प्लस t ऑफ 0v हो जाएगा. यस t मैम. x प्लस t ऑफ 0v इज इक्वल टू t ऑफ x. t ऑफ x हमारा कहाँ था, w में जा रहा है. मैपिंग हमारी t v से w है ना, तो t ऑफ x हमारा t ऑफ x हमारा v में जा रहा है, w में जा रहा है. w के पास इसका जीरो वेक्टर है. सो कैन आई ऑल्सो राइट दिस t ऑफ x एज t ऑफ x प्लस 0 ऑफ w. कैन आई राइट? थिंक करिए इस यस पे. मैम. लिख सकते हैं. अब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में लीनियर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि लेफ्ट कैंसलेशन लॉ एंड राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड होती है ना. मैम Yes, 0 ma'am. ऑफ w मतलब एक मिनट. x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू जेड. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स. यस मैम. यहाँ पे जीरो वेक्टर ऑफ w है, ये w का हमारे जीरो वेक्टर. w हमारा वेक्टर स्पेस था ना, वेक्टर स्पेस था तो इसके पास अपना जीरो वेक्टर होगा. वो जीरो वेक्टर इस w के किसी और एलिमेंट के साथ ऐड होगा तो वही एलिमेंट देगा. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस t ऑफ x एज t ऑफ x प्लस जीरो वेक्टर ऑफ w. जी मैम. आपको क्लियर हुआ? यस मैम. क्लियर. Okay. Now, by applying this left cancellation law of vector space, can I say that t of 0 vector of v is equal to 0 vector of w by यस मैम. बाय लेफ्ट LCL, कैंसलेशन. right? Left cancellation law. So, first property is proof that under linear transformation, 0 vector of v will be mapped on the 0 vector of w. यस मैम. Second property says that t of cx plus y is equal to ct of x plus t of y. Fine. Let us see also how it will be happen. T of cx plus y will be what? cx. x हमारा मेंबर था v का, है ना, v का मेंबर था. y भी हमारा v का मेंबर था. c एक स्केलर था. c स्केलर था. वेक्टर स्पेस हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होता है, तो ये सी एक्स भी हमारा एक मेंबर ऑफ v होगा. c इंटू एक्स.
यस मैम। होगा। तो अगर यस। ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों पे ब्रेक हो जाएगा। दिस विल बी Yes, इक्वल ma'am. टू टी सी एक्स प्लस टी वाई, right? And now again we will utilize the definition, the property of linear transformation कि t c of x is equal to c t of x। ये स्केलर t से बाहर चला जाता है, Yes, ma'am. plus t of y। How? Since t is linear transformation, we can also write in short LT। पर आप लोग अभी LT मत यूज करिएगा। फर्स्ट हमने ब्रेक किया इन दो एलिमेंट्स पे, और अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आई टुक दिस स्केलर आउटसाइड ऑफ द टी साइन। So now can I say that t of cx plus y is equal to c t of x plus t of y? Yes, ma'am. मैम अब हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ, Yes, अगर अब ma'am. आपको प्रूफ करना है कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन या गिवन मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, आप डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई कर सकते हो कि अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, दोनों को इंडिविजुअल करने की नीड नहीं है, अब एक साथ कर सकते हैं कि Yes, सी ma'am. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई है या नहीं। अगर है देन वी विल कॉल दिस एज अ वेक्टर इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इफ नॉट दिस विल नॉट बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? Yes, ma'am. Clear. जी Okay. मैम। The next property says that t of x minus y is equal to t of x minus t of y. This, let us take t of x minus y. Fine. This t of x minus y, y हमारा क्या है? ये minus y क्या होता है? y का additive inverse. जी। Can I write this one as t of x plus minus y? Yes, लिख ma'am. सकते हैं ना? And this one will be t of x plus t of minus y, Yes, ma'am. and फिर this माइनस minus बाहर. माइनस बाहर आएगा। माइनस क्यों बाहर आएगा? क्योंकि ये -1 की तरह बिहेव करेगा, Yes, ma'am. राइट? अब -1 एक स्केलर है, t के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, t हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सो इट विल बिकम t of x plus -1 into t of y, and that will be equal to t of x minus t of y, T of y. Yes, ma'am. राइट? ये वाला किस प्रॉपर्टी से होल्ड हुआ है कि -1 इंटू टी ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी वाई? मैम वो C of T of x वाला मैम क्या होमोजेनिटी शायद. हाँ, माइनस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू माइनस ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की। ये यस मैम. ए कोई स्केलर है, इसके थ्रू हम ये सब चीजें लिख रहे हैं कि पहले जब ये माइनस वाई था, तो हम इस माइनस वाई को अंदर ले गए, फिर इस पे ऑपरेट किया, इस माइनस वाई को हमने ये वाला यूटिलाइज करके -1 इंटू वाई लिखा। अब जब -1 हमारा स्केलर बन गया, तो हम इसे टी से बाहर ले आए। टी से बाहर ले आने के बाद जब ये बाहर आ गया, तो अगेन बाय यूटिलाइजिंग this one minus a into x, I have written minus of ax. Fine. यस And मैम. now, okay, the last property of this slide says that t of summation I is equal to 1 to n ai xi is equal to ai t xi summation I is equal to 1 to n। ये है ना, एक बार चेक कर लें, राइट? इसको फिर देख लेते हैं कैसे होगा। इसको पहले से देखते हैं। a1 x1 प्लस a2 x2,
A1 स्केलर है, x1 वेक्टर है, A2 स्केलर है, x2 वेक्टर है। A1 x1 भी एक वेक्टर होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इज अ वेक्टर। Yes, ma'am. A2 x2 भी होगा, so this will give us what? T of A1 x1 plus T of A2 x2, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यस मैम। अब A1 A2 स्केलर्स है और T लीनियर है, फिर से ये बाहर आ जाएगा। A1 T of x1 प्लस A2 T of x2, आ जाएगा। यस मैम। Okay, ma'am. Now I will come to this summation symbol. T summation I is equal to 1 to n AI xi. Can I write this one as T A1 x1 plus summation I is equal to 2 to n AI xi? वन वाला टर्म हमने बाहर लिया, कर सकते हैं। यस मैम। अब ये हमारा एक मेंबर है V का, ये दूसरा मेंबर है V का। T हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक स्केलर है। कैन आई राइट दिस वन एज A1 T of x1 प्लस T समेशन I इज इक्वल टू 2 to n r, एक एलिमेंट और हम बाहर लेते हैं क्योंकि ये रिकर्सिव प्रोसेस के थ्रू आता है। A2 x2 प्लस समेशन I is equal to 3 to n AI xi. Can I write this? यस मैम। यस मैम। अब ये T फिर से A2 x2 प्लस समेशन ऑफ दिस, फिर से हम T की लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये A2 बाहर आएगा, T x2 बाहर आएगा और ये T जाके इस वाले सम पे ऑपरेट हो जाएगा। यस मैम। मैम ये कब तक कंटिन्यू होगा, ये समेशन ऑफ I of 3 I of 4 ऐसे करके कब तक? Until we are getting this whole AI outside and T on xi inside. यस मैम। A1 T of x1 plus A2 T of x2 plus T summation I is equal to 3 to n AI xi, right? अब जैसे ये T इन सब पे ऑपरेट हुआ, ये कंटिन्यू जब प्रोसेस हम करेंगे तो ये कहाँ तक हमें दे देगा? This will give us A1 T of x1 plus A2 T of x2 plus and so on plus an T of xn मिलेगा हमें, क्योंकि ये सम हमारा n तक जाने वाला है। और इसी सम को we can write this one as summation I is equal to 1 to n AI T of xi. We can write. यस मैम। And this is the result which we have to prove, that summation of T of summation I is equal to 1 to n AI xi is equal to summation I is equal to 1 to n AI T of xi. Okay? Yes, ma'am. यस ma'am. मैम। Okay. मैम थोड़ा वर्क नीचे कर दीजिए, हो गया देख लिया। नीचे नहीं मैम, जैसे था मतलब नीचे जो भी लास्ट वाला लिखे वो थोड़ा दिखाइए। Yes, ma'am. Done. Okay. So today we will stop here. We will meet in the evening. Any query? No, नो ma'am. मैम। Okay. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Have a good day.